Good afternoon, everyone. How are you today? I hope all of you are fine, fit, and healthy, and you are paying a lot of attention to studies. You are studying a lot. You are mm, paying attention in terms of understanding things. And because today is our 12th day, okay, and today is our 12th day, and we are going to understand some of the things related to it as a subject. In the last class, we saw the usage of there as a subject, and then today we are going to understand. It's a easy topic, easy to understand, but we need to see some examples. We need to understand how it as a subject is used in different kind of sentences. So we will go through that part. Okay. You will understand how to use it as a subject, how to use it in different sentences, understand the situation also where it is used, like you understood there as a subject, how to use there as a subject, how to use it in different sentences. So all these things are important. And earlier also we talked about verb to be, and then we discussed also possession. We saw different sentences related to possession, verb to be sentences, present, past, future. And then we saw the usage of there as a subject, where to use, how to use. We did some exercises also. We saw some situation where you can possibly use there as a subject to get the idea how to make sentences, how to talk about these things. So it's all about getting ideas related to different sentences, related to different situations. So understand the situations, understand the situation in terms of, because there could be three situations, right? हम हमेशा three situations की बात करते हैं. So it could be present, it could be past, it could be future. And then there are some changes in those situations. So it's important to understand the situation because that is the first one. And why there is need to understand the situation? Because you don't want to get into the habit of translation, right? Of translating every sentence into Hindi and then from Hindi to English. You can do that, right? It's not like that you can't do, you should not do. You can do that when it's very difficult to understand the sentence, when you are not getting the idea how to make a sentence, how to ask question, how to give answer. If you don't understand at all, then you can take the help of Hindi. But for that also, you need to get into the habit of understanding and then using the language just by thinking in your head. So you have to think everything in your head. You have to get into the habit of thinking in English. So that is the important point. Thinking in English is very important because once you get into the habit of thinking in English, then you will be away from thinking in Hindi. ओके सो वो हमको हेल्प करेगा. सो इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा धीरे धीरे डलेगी ये हैबिट, एकदम से नहीं डलेगी. सो यू डोंट हैव टू थिंक दैट you get up in the morning and then you are able to do that very comfortably. No, this will not happen. It will take some time. And धीरे धीरे जब आप कोशिश करते रहेंगे, so you will see कि हाँ धीरे धीरे आपकी हैबिट डल रही है इंग्लिश में सोचने की. अब ये सोचने की इंग्लिश में हैबिट क्या है? ये सिंपली ये है कि आप डायरेक्टली सोचने के बाद सेंटेंस यूज कर रहे हैं विदाउट ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस इनटू हिंदी. बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि समटाइम्स इट हैपेंस दैट फर्स्ट यू इफ you are making a sentence, so first you make it in Hindi and then you see how to translate it into English and then you do that and then you speak. So see, the process is quite long, right? It's a lengthy process. First you are getting it into Hindi and then you are converting it into English and then you are speaking. And the same happens when you understand. So if someone is asking something, first you will translate it into Hindi and then you will do that in English. Okay. So first, let's go through. Okay. I accidentally turned off my video. All right. Okay. Give me a moment. There is a vegetable seller in my area. Okay. So I'm going to pause for a moment.
All right, so here we are. We are on day 12, and just see that in 12 days में हमने क्या सीखा, हमारी क्या प्रोग्रेस चल रही है, राइट? कितना समझ में आ गया, कहीं पे कंफ्यूजन है, कहीं पे क्वेश्चन है. So you have to calculate each and everything on daily basis, right? On daily basis in terms of understanding things, in terms of using them. That yes, I'm comfortable with these topics. I'm able to use them. I'm able to make sentences. I can ask questions related to these situations. So ऐसे आपको comfortable होते जाना है. So जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, it means जो हम topics कर रहे हैं उनमें आपको comfortable होना है. Comfortable in the sense that you know them, how to use, right? How to use according to the situations. Okay. So quickly we are going to go through the topic it as a subject of a sentence. In the last class we saw the usage of there. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप इट एज ए सब्जेक्ट यूज करें. ओके, एंड कैसे एग्जाम्पल्स होंगे, जल्दी से ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए. अंडरस्टैंड दी सेंटेंसेस. Okay, so we use it with times and dates and days. When you want to make some sentences related to time, when you want to tell the time, when you want to ask a question related to the time, when you want to talk about the dates, when you want to talk about the day, for example, Sunday, Monday, right? Weekdays, okay, weekends. So when you want to talk about them, you will use it as a subject. So for example, of course, you can say if someone asks you this question, what's the time? What time is it? दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है. क्या टाइम हो रहा है? What time is it? So you can directly say 2 o'clock. You can directly say 3 o'clock. But there is a way to form a sentence. So you will form it, it is 2 o'clock, right? So now this is your proper sentence. So someone is asking you, what time is it? And you are saying, it is 2 o'clock, it is 3 o'clock, it is 4 o'clock. So it could be any, uh, but you will make sentence like this. So what day is it today? Okay, so of course you can say Tuesday, directly बोल सकते हैं हम. But how to make proper sentence? You will say, it is Tuesday today. It is Tuesday today. So it could be again, it could be present, it could be past, it could be future. So normally जैसे हम तीनों situations में sentences use करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे it को it से भी sentences use करेंगे. जैसे आपने there से use करे थे तीनों situations में, present, past, future. In the same way you will use it. Okay. So for example, what day is it today? It is Tuesday today. What month is it? Right? It is December, right? It is 12th December today. If you are talking about past, so just take the uh, take proper grammar, use proper grammar in place always use was. So it was 11th December yesterday because you are talking about yesterday. And then if you want to talk about future tomorrow, you will say it will be 13th December tomorrow. Okay, so simple sentences, super easy sentences. But kya situations and situations that we want to talk about time, dates, and dates. And is tarah ke sentences mein we will use it as a subject. So it as a subject that we are starting these sentences with the help of it. And you will make all sorts of sentences related to present, past, future situations. वहाँ पे simple सा क्या change का ध्यान रखना है आपको? You will take care of grammar. Is, was, right? So that is important. And then what are some other situations? और क्या हो सकती हैं situations that you want to talk about weather? वेदर की बात कर रहे हैं, राइट? या ऐसी सिमिलर कंडीशंस की बात कर रहे हैं वेदर से रिलेटेड. सो फॉर एग्जांपल हम ऐसे बोलते हैं ना, आज बहुत ठंड है. So how will you say it is very cold today? It is cold today. कल बहुत ठंड थी. It was cold yesterday. So simple sentences. It was hot yesterday. So you can think of any sentence related to the situation that matches with the situation. जो भी situation से match कर रही है sentences, उनको आप easily use कर सकते हैं. Right? So it is dark, it was dark, it will be dark, it is sunny. Sunny, it means sun is shining, right? You can see the sunlight. Okay, so you are saying it is sunny today. It was sunny yesterday. It will be sunny tomorrow. It is cloudy. When you see that there are clouds and there are chances
of some sort of rain, of heavy rain, right? So you are saying it is cloudy. It is cloudy, clouds are there. You can see clouds in the sky. Okay, so it is cloudy. Again, it was cloudy yesterday. It will be cloudy tomorrow, as per the weather forecast. It is raining. It looks like raining. It will rain after some time. It is rainy, or it is raining. It is raining, like that. So we are making simple sentences. Okay. And of course, you can make negative sentences also. You can ask questions also. So ये सारे आपको कब समझ में आएंगे? बताइए कब समझ में आएंगे? जब आप ट्राई करके देखिए. So इसलिए ट्राई करना very important. So think of sentences, think of situations, and then use them. Okay. And in order to use them, best way that you are sitting with your family members, you are sitting with your friends, and then you are asking, then you are making sentences, you are practicing together. And इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि try to bring your friends, right? Tell them also, right? That there are some classes, right? I am studying, I am learning. You also come with me, you also study, you also learn. And then that way you can practice together. That way you have a practice partner, right? So you can practice together. So here आप it इस तरह की situations यूज कर लेंगे. It as a subject हम यहाँ पे इन examples में देख रहे हैं कैसे यूज हो रही है. बस सिंपल है. इस तरह से हम इसको यूज कर लेंगे. जैसे आपने देयर को यूज करा था वैसे इट को यूज कर लेंगे, बट सिचुएशन का ध्यान रखेंगे. देयर हम कैसे सिचुएशन में यूज कर रहे हैं? जहाँ पे यू वांट टू डिस्क्राइब, यू वांट टू टॉक अबाउट अ रूम और सम प्लेस, there you are using there as a subject, you are asking question. Okay, so again, it depends on the situation, and then that's how you will make different sorts of sentences, ask questions. Clear? So it was a easy topic. Yeah. लेकिन ट्राई करते रहेंगे कंटिन्यूअसली. आप सेंटेंसेस बनाते रहेंगे in order to understand, in order to be comfortable with these sentences. इन sentences से comfortable होने के लिए आपको you have to keep on practicing, keep on trying. जितना ज़्यादा practice, जितना ज़्यादा try होगा, उतना ज़्यादा you will see that you are understanding, you are getting comfortable. So in order to be comfortable, you have to keep on trying. चलिए अब ट्राई करने के लिए डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करते रहना है. एंड प्रैक्टिस करने के लिए क्लास में हम यही कोशिश करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो. एंड क्लास के बाद ये जो वीडियोस हैं ये यूट्यूब पे हैं, राइट? सो आपके पास ऑप्शन है कि आप बार बार ये वीडियोस देख सकते हैं, पॉज करके एक्सरसाइज को फिर से ट्राई कर सकते हैं जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आपको ऐसा नहीं लगता दैट यस आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड नाउ आई कैन यूज इट वेरी वेल. सो ये आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा. एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम स्पोकन की बात कर रहे हैं, अगर हम सेंटेंसेस बोलने की बात कर रहे हैं, सेंटेंसेस सोचने की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको एक्सरसाइज के थ्रू ही समझ में आएंगी. एक्टिविटीज जो वर्कशीट्स हम करते हैं उसके थ्रू ही आपको आइडियाज मिलेंगे कि हम कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सेटिंग्स में सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं. हमको सेंटेंसेस को यूज करना है. ओके. तो अभी मैं आप लोगों से एक और पिक्चर शो कर रहा हूँ, एंड उस पिक्चर में आप सेंटेंसेस ट्राई करें. ओके, गिव मी अ मोमेंट. आई एम गोइंग टू share one picture with you, and कुछ questions भी आपसे अभी मैं शेयर करूंगा, and इनको आपको ट्राई करना है. ओके, चलिए सबसे पहले pay attention to this picture. Okay, so again you are going to talk about this picture. Okay, so in order to talk about this picture you will make some sentences. Okay, so पहले तो आप खुद से ट्राई करें कि क्या पॉसिबल सेंटेंसेस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ओके, क्या पॉसिबल सेंटेंसेस आप ट्राई कर सकते हैं. एंड विद दिस पिक्चर यू हैव टू थिंक अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन. आपको यही अभी कंसीडर करना है, इमेजिन करना है दैट यू आर सीइंग दिस पिक्चर राइट नाउ एंड यू वांट टू टॉक अबाउट, डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके,
डिस्क्राइब कर रहे हैं रूम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, रूम में जो आप देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, राइट, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जस्ट टॉक अबाउट। ओके, पॉज करके पहले कोशिश करेंगे, सेंटेंसेस ट्राई करेंगे, देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू आर ट्राइंग, यू आर मेकिंग, एंड उसके लिए बेस्ट वे क्या है, जल्दी से मोबाइल फोन लेंगे एंड मोबाइल फोन लेके जो भी सेंटेंसेस आप ट्राई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप उसको एक बार सुन के भी देखेंगे कि आपने क्या सेंटेंसेस बनाए। ओके, क्या सेंटेंसेस बनाए, किस तरह के सेंटेंसेस आपने यूज करे, कितना आपको आइडियाज आए सेंटेंसेस के, कि हाँ मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ, राइट, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस पिक्चर। ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सो यू कैन टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, एंड फॉर दैट यू नीड सेंटेंसेस। सो सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। ट्राई करने के बाद फिर आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। ये तो बहुत इजी है, इन ये सेंटेंसेस आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएंगे, बट लेकिन फिर भी आप इनको कंप्लीट करेंगे, एंड कंप्लीट करने के बाद ये सेंटेंसेस आप देखेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस आर देयर, एंड आपके सेंटेंसेस क्या थे। जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो डेफिनेटली you know about your sentences, you have the idea that what sort of sentences I made, I spoke. So उसको फिर यहाँ पे थोड़ा सा टैली करके देखेंगे कि क्या हम और सेंटेंसेस भी यूज कर सकते थे, क्या सेंटेंस मुझे ध्यान में नहीं आया, मैं क्या और ट्राई कर सकता था, क्या सेंटेंस और बोल सकती थी, मैं क्या बना सकती थी रिलेटेड टू प्रेजेंट सिचुएशन। तो एक बार इस एक्सरसाइज को, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको भी आप कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। ओके, एंड यहाँ पे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, इजी है सब। आपको क्या यूज करना है, सेंटेंसेस पढ़ के ही समझ में आ रहा है आपको, रिलेटेड टू सिंगुलर एंड प्लूरल थिंग। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस, देयर इज अ वेब ऑन द विंडो। ओके, सो पिक्चर को देख रहे हैं हम, पहले पिक्चर को देख रहे हैं एंड देन हम बोल रहे हैं देयर इज अ वेब ऑन द विंडो, राइट। फोर्थ एग्जाम्पल, देयर इज अ रेडियो ऑन द टीवी सेट। ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, पिक्चर को आप देख रहे हैं, पिक्चर को आपने देखा, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि रूम में क्या है, आप बोल रहे हैं देयर इज अ रेडियो ऑन द टीवी सेट। ओके, सो यहाँ से मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, बिकॉज आई नो ये सारे एग्जाम्पल्स तो इजी हैं, आप लोग कर लेंगे। ओके, एंड देन you are seeing these sentences, you are completing them. And for example, 10th one देखें, 10th one you are saying there is a thick book in front of the apples. Okay, so हमने ऑब्जर्व किया, एंड क्या हमने ऐसे सोचा कि yes I can make this sentence, there is a thick book in front of the apple. So यहाँ पे ये आपको और आइडियाज थोड़े से मिल जाएंगे ये सेंटेंसेस पढ़ के, कि हाँ हम यहाँ पे ये सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, आप एक बार फिर से ट्राई करेंगे। ओके, एक बार फिर से ट्राई करेंगे, एंड फिर से क्या ट्राई करेंगे, एक बार आप फिर से, यू विल ट्राई टू से समथिंग अबाउट दिस पिक्चर। Okay, again, you will try to say something about this picture after completing these blanks, after getting the ideas that yes, these are the possible sentences. And then again, you will try to make some sentences to say something about this picture. And again, you will record yourself. Okay. And after recording, you will listen back. Usko phir sun ke dekhenge, and then you will see that what is the difference between the first attempt and the second attempt. एंड डेफिनेटली वहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने ट्राई किया था, वो सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा बेटर होगा, राइट, डेफिनेटली इट विल बी बेटर, राइट, बिकॉज नाउ यू हैव गॉट द आइडियाज। सो रिलेटेड टू स्पीकिंग, हमको ये भी समझना है दैट इट इज ऑल अबाउट आइडियाज, एंड आइडियाज कैसे आएंगे, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे आइडियाज नहीं आएंगे। So in order to get lot of ideas, you need to try. You need to say something. You need to make some sentences. Okay, and it's all about practice. So seriously इसको करना है। Okay, seriously कैसे करना है, पहले फर्स्ट टाइम पे आपको एक बार ट्राई करना है। Okay, ट्राई करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, फिर आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। You will get the ideas. Okay, get the ideas. What are the possible sentences? And again, you will try to make sentences, you will try to say something about this picture, and again you will record, and then you will listen back, फिर उसको वापस से सुने। ठीक है, ऐसे करना है। एंड जब आप ये कर लें,
So then you have to do second time. What you have to do, you have to do it, okay, in पास्ट सिचुएशन. ओके, फिर आपको इसको पास्ट सिचुएशन में भी करके देखना है. एंड पास्ट सिचुएशन में आप इसको करने के लिए क्या इमेजिन करेंगे? आप इमेजिन करेंगे दैट यू वेंट टू योर फ्रेंड्स हाउस. आप अपने फ्रेंड के हाउस में गए एंड देन यू सॉ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट हाउस, राइट? So there were butterflies, there were flower pots there. Okay, so like these sentences, I'm just giving you those ideas. I shouldn't have given you. So पास्ट सिचुएशन को कंसीडर करने के लिए आप क्या कंसीडर करेंगे? उसको कंसीडर करने के लिए यू विल सी दिस पिक्चर. अब आप इस पिक्चर को देखिए. इस पिक्चर को देखने में आप क्या इमेजिन करेंगे कि आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए, यू वेंट टू योर फ्रेंड्स हाउस एंड यू सॉ लॉट ऑफ थिंग्स देयर. ओके, एंड देन you want to talk about those things that okay, I'm not giving you those sentences, वो आपको खुद से ट्राई करना. तो यहाँ पे अगेन यू विल पॉज, यू विल मेक पास्ट रिलेटेड सेंटेंसेस. ओके, सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं. यहाँ पे हम पास्ट सेंटेंसेस यूज करना चाह रहे हैं. So you will make past sentences. Okay, there are a lot of things that are not here in this picture. Okay, so you will say that okay, पहले try कर लेंगे. Okay, I'm not giving you ideas. Try करने के बाद, record करने के बाद, then you will see this part. फिर आप इस पार्ट को देखेंगे एंड ये जो पार्ट है ये हमारा पास्ट सिचुएशन का है, राइट? बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट पास्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. यू वेंट टू योर फ्रेंड्स हाउस एंड यू सॉ लॉट ऑफ थिंग्स देयर इन दैट रूम, right? And then you want to talk about. So how will you say? You will say first one, there was a web on the window, right? So earlier you said there is a web because you were seeing those things. Okay. Now you want to talk about past, so you are saying there was a web on the window. And similarly, you will complete all these sentences. Super easy, not difficult. But again, अगर कोई confusion है तो you will ask. And there was a radio on the TV set. Okay, there was a thick book in front of the apples. There were glasses next to the book. 11th one. There were glasses next to the book. Okay, so again, you will take care of singular plural part. Okay, if one thing singular, if plural, then was in place of was, you will use were. So that's how you will complete these sentences. एंड यहाँ पे आइडियाज लेने के बाद अगेन यू विल ट्राई. ओके, जैसे हमने प्रेजेंट सिचुएशन में ट्राई किया था, अगेन फिर से आप ट्राई करेंगे. ओके, एंड अगेन यू विल रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड देन यू विल लिसन बैक जस्ट टू कंपेयर that after getting ideas, what different sentences you spoke, you used, what different sentences you made. Okay, just to get that idea. एंड थोड़ा सा आइडियाज लेने के बाद क्या बेटर सेंटेंसेस हमने ट्राई किए. ओके, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है व्हेन यू गेट सम आइडियाज. सो इस एक्सरसाइज को करेंगे. ओके, एंड इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप क्या करेंगे? अपने जो आपने वॉइस रिकॉर्ड की है उसको सुन के देखेंगे, राइट? एंड देन सी दैट इफ देयर आर सम सेंटेंसेस that you spoke very well, wonderful. And if you see that there were some areas that you got confused, so then correct them, understand them and correct them. Understand करने के बाद उनको correct भी करके देख लीजिए कि हाँ, I had to say this thing, I had to make sentence like this. Okay, so वो correct करके भी देख लें. Okay, so ये हमने एक एक्सरसाइज की है देयर की, एंड इसको जैसा मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही ट्राई करके देखेंगे. ओके, सो जस्ट टू गेट द प्रॉपर रिजल्ट आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज, वो जरूरी है. चलिए, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू सम मोर क्वेश्चंस. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितनी ज्यादा आप ऐसे ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा आइडियाज यू विल गेट. ओके, सो आइडियाज लेने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू डू some exercises, right? You have to practice that way. चलिए, ओके, सो ये आपको एक्टिविटी जो हमको करनी है समझ में आ गई है आपको कैसे करनी है. ओके, आई हैव गिवन यू द आइडिया, एंड इसको ऐसे ही करके देखें. एंड करके देखने के बाद एंड देन डेफिनेटली यू विल फील confident that yes, I can make sentences, I have understood the situation.
and I made two sorts of sentences related to present and past situation. I used there as a subject in those situations. Okay, so वो फिर वो भी clarity आती है कि किस तरह के sentences आ रहे हैं जहाँ पे हम there as a subject use कर रहे हैं. So you understand that. Okay? So वहाँ पे आपको एक्सरसाइज भी कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेंगे, तो उससे भी आइडियाज मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए अब एक एक्सरसाइज और आई विल शो यू एंड देन यू विल ट्राई टू कंप्लीट इट. ओके. Okay, I am going to share the page with you. All right. Here again, there are some questions. You will read the question and you will quickly answer the question. यहाँ पे आपको क्या करना है? Read the question, answer the question. Read the question, answer the question. And when you are answering the question, what you have to do? Second thing, important, because all these questions they are related to yes no questions. ये आपको समझ में आ रहा है ना? So दोनों answers देंगे. You will give yes answer also. You will give no answer also, just to practice. Yeah, just to practice. So you will give answer to these questions. After giving answers, then you will try this one. फिर आप ये try करेंगे. Okay, and quickly you will try to answer these questions, right? You will remember, you will not try to translate. Okay, so you need to understand the sense of these questions. Is there a TV room in your set? Understood? Give the answer. Yes, there is a TV in my room. No, there isn't any TV in my room. Yes, there are some toys. There are three toys on my bed. No, there aren't any toys on my bed. Okay, so understand the situation, give answers. Okay, very easy. I know that it's like a cup of tea for you. And after that, you will answer these questions. Okay, quickly. Okay, quickly read the questions and answer these questions. Give two answers, yes answer, no answer, and also pay attention to the questions, that how these questions are being made. So suppose if you want to ask similar kind of questions to your friend, then how will you ask a question? So यहाँ पे आपको क्वेश्चन का भी आइडिया लेना है, that how these questions are being asked, किस तरह से पूछे जा रहे हैं, right? How will you ask this question to your friend? Is there a bottle with water? Is there a water bottle in your bag? You can also ask that question. Is there a lunch box in your bag? Right, like that. So answer these questions, practice these questions. Okay, so I'm showing you these questions just to practice, just to make some sentences, right? Just to give yes, no answer. Okay. So something related to your fridge. Here are some questions. You can think of some other questions also. ये तो मैं आप लोगों को ideas के लिए questions दिखा रहा हूँ. You can think of some other questions also. And उसके लिए if you are sitting with your friend, if you are with your family members, so वहाँ पे वो थोड़ा सा better हो जाएगा, because then you can generate ideas that what question could be asked, what answer could be given. वो वहाँ पे फिर थोड़े से ideas generate हो जाएंगे अगर आप अपने friends के साथ बैठ के practice कर रहे हैं. And if there is someone in your family who is with you, want to practice, okay, who can help you with these sentences, वहाँ पे थोड़ा सा easy हो जाएगा. Okay, so answer these questions, and after that answer these questions, okay, quickly. Okay, so here you are paying attention to the questions also, and then you are giving both answers, yes answer, no answer. Okay, and after doing that, give answer to these questions. Okay, quickly. So again, you can try that. You can just record yourself. Okay, you can record yourself, and you can read the question. Are there five dresses in your wardrobe? And then you can yes no answer. Okay, like that. Record yourself. When you record yourself, of course, you pay attention to your sentences, whether they are okay or not. You also need to pay attention to the pronunciation, whether you are pronouncing words properly. So speak slowly, pronounce words properly. And if you don't pronounce the word and you see that, okay, I didn't pronounce the word properly, so then do that again.
फिर से एक बार प्रोनाउंस करके देखिए उसको, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा नहीं है कि हमने एक बार किया, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन हमको नहीं समझ में आ रहा कैसे प्रोनाउंस करना है, तो बार बार करके देखना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। एंड जब बार बार कर लेंगे 2-3 टाइम्स, तो फिर वो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल wardrobe, so you will say it wardrobe. Okay, wardrobe. Mirror, so you will say mirror. You will not say mirror. Mirror, no. You will say mirror. Okay, mirror. So mirror, wardrobe. If you come across any word that is difficult in pronouncing in terms of pronunciation, then try to pronounce it properly. And if you don't understand how to pronounce, then you have a comment section. You can type that word in the comment section that I am confused how to pronounce this word. Okay, then we will discuss it in the next class. Okay, so like this, you have to pay attention to each and everything. Okay? So यहाँ पे आप ये एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ओके, इन क्वेश्चंस के जल्दी जल्दी से आंसर्स देंगे, जल्दी जल्दी इन द सेंस that you will try to give answers, proper answers. Okay, proper answers. And after giving answer to these questions, you will give answer to these questions. Okay, so there are a lot of questions, so you are reading question and then you are giving answer. Okay, then you will try these questions. एंड अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हैं तो अपने फ्रेंड को बुला लेंगे, कहेंगे ओके ऑल राइट लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, ओके लेट्स डू दिस एक्टिविटी, I'll ask you these questions, you will give answers, then you will ask me some questions, I will give answers. So वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हैं, so that is the benefit uh, of being there with your friends. Okay, and that is the benefit that you are with someone who can practice with you. Okay, so if you are okay there to practice together, so वहाँ पे आपको बहुत अच्छी उसकी एडवांटेज मिलेगी। ओके, सो आज हमने काफी सारी एक्सरसाइजेस देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, in terms of asking questions, in terms of saying something related to those situations. Okay, so that's how you have to take care of the this मेकिंग सेंटेंसेस पार्ट। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, उतना ज्यादा समझ में आएगा, एंड उतनी ज्यादा आप डिफरेंट सिचुएशंस को यूज करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया तो ये सारी एक्सरसाइजेस आप लोग कर लेंगे। एंड अब हाँ, ओके, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, एंड देन आई विल पॉज फॉर सम टाइम। इन दैट पॉज यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ओके, जैसे हमने पहले भी करी है एक्सरसाइज, वैसे ये एक्सरसाइज हम करेंगे। आई विल आस्क अ क्वेश्चन, पॉज, एंड देन इन दैट पॉज यू हैव टू answer that question. Okay, let's start with this question. How are you? Are you at home? Is your father at home? Where is your brother? Is he with you? Are you a student? Who is your best friend? Who is your close friend? Where were you yesterday? Were you with your friends? Were you at home? Where was your brother yesterday? Was he with you? Is your sister in the kitchen? Is she with you? Does your sister have a mobile phone? Answer, okay, and pay attention to your answer when you are giving answer to these questions. Also, understand the question. Don't try to think in Hindi. Don't translate it in Hindi. Okay, पहले try करेंगे कि you are understanding the question. जैसे ही आप सुन रहे हैं, you are understanding the question, and quickly you will try to answer the question without translation. Okay, do you have a bike? Does your father have a bike?
Did you have a bike 2 years ago? Did your sister have a laptop 2 years ago? Will you have lot of knowledge? Will you have lots of money? Does your friend have a bike? Will you be busy tomorrow? Will your father be free tomorrow? Will you be at home tomorrow? Were you at home yesterday? Why were you late yesterday? Now give any reason, okay? Why were you late yesterday? Are you stubborn? How many members are there in your family? How many members are there in your family? Are you in your drawing room? How many fans are there? Is there a big sofa in your room? Is there a big TV in your room? Are you in the market? When will you be free? Will you be free in the evening? What time is it? Is it 3 o'clock? Is it Wednesday today? How many students are there in your class? How many students were there in your class yesterday? Are you getting these questions? So understanding the question, according to the question, give answer. Okay. So different questions are there. So you are understanding them and understanding after understanding, you are not thinking in Hindi. Okay. So हमको इसको हैबिट में लाना है. हो सकता है थोड़ा सा आपको अभी डिफिकल्ट लग रहा हो कि एकदम से समझ में नहीं आ रहा क्विक क्वेश्चन आ रहा है एंड देन यू हैव टू आंसर इट क्विकली सो देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी बट देन जस्ट गिव इट अ ट्राई ट्राई करें try करके देखें that yes, I'm getting the question, understanding the question, because the same thing will happen in a natural conversation, in normal conversation, when you are sitting with someone, when you are talking to someone, same thing will happen. So there you will not get a lot of time in terms of thinking, in terms of translating sentences from Hindi to English, from English to Hindi. वहाँ पे आपको इतना time नहीं मिलेगा, right? So questions ऐसे ही आएंगे, prompt questions आएंगे, and in the same way you also have to think of questions. So आपको questions भी पूछने की habit डालनी है, okay? So you also have to think of questions, ask some questions. Okay? So again, you will sit with your friend and you will ask your friend to ask some questions. Okay, and then you will also try to ask some questions to your friend. So you are doing both things. You are answering questions and you are asking questions. You are answering questions and you are asking questions. And you are trying to ask different questions. You are trying to give different answers. तो वो थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है so that you have the idea of giving the answer to that question. So like this, you have to keep on trying, keep on thinking, keep on making questions, keep on giving answers. So इसमें आप थोड़ा सा राइटिंग पार्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं. राइटिंग पार्ट व्हाट आई मीन कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चंस सोच के वो लिख सकते हैं.
that I want to ask this question. So you can write it in your notebook. And after writing that question, try to give both answers. Okay, if you have asked yes no question, so definitely वहाँ पे आप yes no answer दे सकते हैं. But if you are asking WH word question, then you cannot give yes no answer. ये हमें पता है, right? So जब WH word question पूछ रहे हैं तो then you will simply give the answer. Where were you yesterday? I was at home yesterday. So you will not give yes no answer. Okay. Are you at home right now? Yes, I am at home right now. No, I'm not at home. I'm at my friend's house. I'm with my friend. So it could be any answer, right? So कोशिश करिए कि जितने ज्यादा पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, आंसर सोच के, राइट, कि क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, व्हाट यू कैन से, एंड देन गिव इट अ ट्राई. ओके, ट्राई करके देखें, मेक सेंटेंसेस लाइक दीज, आस्क क्वेश्चंस लाइक दीज. जितना ज्यादा आप ऐसे करेंगे उतना ज्यादा आपको आइडियाज मिलेंगे कि हाँ, हम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम ऐसे आंसर दे सकते हैं. So use different situations to ask questions. अभी हम वही सिचुएशंस टारगेट कर रहे हैं जिनको हमने समझ लिया है, जिनको हमने समझ लिया है कि इन सिचुएशंस में हम कैसे सेंटेंसेस यूज करेंगे, कैसे सेंटेंसेस बनाना है हमको. वही सिचुएशंस हम ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज देन यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दीज सिचुएशंस. आपको इन सब सिचुएशन से कंफर्टेबल होना है. सो यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड देन यू हैव टू बी कंफर्टेबल. क्योंकि बात सिर्फ समझने की नहीं है, समझने के बाद आपको उसमें कंफर्टेबल भी तो होना है, एंड कंफर्टेबल एकदम से नहीं होते. ओके, बिकॉज हैबिट की जरूरत होती है कि आप बार बार सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. इसलिए जितना ज्यादा आप ये करेंगे, क्वेश्चन पूछना, आंसर्स देना, यूज करना सेंटेंसेस, उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल होते जाएंगे. इसलिए सेंटेंसेस को यूज करना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं. समझने से हाँ, समझ में आ जाएगा, लेकिन अब आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो वो फिर कैसे आएगा? सो हैबिट में लाने के लिए, राइट, कि एकदम से आपने, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको प्रॉम्प्ट आंसर देना है ना, वहाँ हम ज्यादा देर नहीं हमको मिलेगी, हम ज्यादा देर तक नहीं सोचेंगे. यू विल नॉट से दैट वेट फॉर सम टाइम, आई वांट टू थिंक एंड देन आई विल गिव आंसर. You can't do that, right? So you have to quickly answer that question. You have to quickly ask the question. So for that, you don't get a lot of time in spoken. In writing, you get a lot of time. Writing तो है हमारे पास time, right? आप सेंटेंस सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको इरेज भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं. सो राइटिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड स्पीकिंग इज अ डिफरेंट. स्पीकिंग यू हैव टू डू इट वेरी क्विकली. ओके, सो इसलिए इसकी हैबिट बोल बोल के ही डालनी पड़ेगी. और जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे, उतना ज़्यादा समझ में भी आता रहेगा एंड सिचुएशंस भी समझ में आती रहेंगी. एंड देन यू विल बी कंफर्टेबल, राइट, कि हाँ, इन सेंटेंसेस को हमको ऐसे यूज़ करना है. एंड फॉर दैट यू हैव टू गेट इन टू द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश. ओके, हमको इस पे भी सीरियसली ध्यान देना है कि दैट you are trying to think in English. You are not taking the help of Hindi sentences. वहीं पे you will take help जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, this is the sentence I am not getting. I don't know what is the meaning of this sentence. What is the sense coming out of this sentence? There only you will take the help of Hindi. Hindi, in sense that you will translate it in Hindi, or before answering the question, you will translate it into Hindi, because this is a long process, lengthy process, right? So से जितना जल्दी हो कि हम इस प्रोसेस को अवॉइड करें, स्किप करें, एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग. ओके, सो आज हमने काफी सारी एक्सरसाइजेस करी हैं, राइट? एंड ये एक्सरसाइजेस आपको करते रहनी, जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा करिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, राइट? उसमें आप ही कंफर्टेबल होंगे जब ये लगे कि ओ, अब तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया हूँ, आई हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, right? How to make sentences, how to use these sentences, how to ask questions, right? फिर that आप समझ जाइए कि हाँ, अब मैं कंफर्टेबल हो गया. जब तक कंफ्यूजन आ रहा है, जब तक डाउट्स आ रहे हैं, जब तक समझ में नहीं आ रहा, जब तक यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, आपको करते रहना है, राइट? ओके, सो यू हैव टू मेक ऑल दीज थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर योर सेल्फ. अपने लिए सब ये चीज़ें, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, इसलिए ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं कि ताकि आपको, आपका इंटरेस्ट रहे वहाँ पे, राइट? ट्राई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए.
चलिए, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज शो करूंगा, एंड जो आप लोग करेंगे, एंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये एक्सरसाइज आपने कैसे कंप्लीट करी। ठीक है। चलिए, आई एम गोइंग टू शेयर माय पेज विथ यू, गिव मी अ मोमेंट। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे ये जो टॉपिक्स देख रहे हैं आप, इनमें मिक्स सेंटेंसेस हैं, वर्ब टू बी के भी हैं, पोजीशन के भी हैं, देयर एज ए सब्जेक्ट के भी हैं, इट एज ए सब्जेक्ट के भी हैं। एंड ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे, ये जो ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ये टॉपिक्स हमने कवर की। ओके, सो फॉर अ क्विक प्रैक्टिस के कितना आपको समझ में आया, तो जल्दी से यहाँ पे पॉज करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, सो कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड हैं, तो आप सेंटेंस पढ़ के समझिए कि उसकी क्या सिचुएशन है। इज इट अ वर्ब टू बी सेंटेंस, इज इट अ पोजेशन सेंटेंस, इज इट अ सेंटेंस एज देयर एज अ सब्जेक्ट, और इज इट अ सेंटेंस इट एज अ सब्जेक्ट। वो आप पढ़ के यू गेट द आइडिया, एंड देन यू कंप्लीट द missing parts. Okay, so all these blanks are related to present situation. So it could be a negative sentence, it could be a question. You will complete according to that. Okay, जैसा sentence उसी की तरह आप उसको complete करेंगे. And then you have some past sentences. Okay, so past related sentence आप complete करेंगे. यहाँ पे सब mixed sentences आएंगे, right? Just to give you a practice. Okay, कि आप कितने अच्छे से इसको comfortably समझ के sentences को, and आप उनके missing parts fill कर रहे हैं. Okay, so फिर ये आप past part कर लेंगे. Okay, and then after doing the past part you will do the future part. Okay, सो बिकॉज हमारे पास हर टॉपिक से रिलेटेड थ्री सिचुएशंस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन तीनों सिचुएशंस में हम सेंटेंसेस यूज करते हैं। सो यहाँ पे तीनों सिचुएशंस हैं, प्रेजेंट पास्ट हैं, लेकिन सेंटेंसेस डिफरेंट हैं। सेंटेंसेस वर्ब टू बी से भी हैं, पोजीशन से भी हैं, देयर एज ए सब्जेक्ट से भी हैं, इट एज ए सब्जेक्ट से भी हैं। वो आप सेंटेंस पढ़ के समझ के कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड आई होप कि आप लोगों के सारे आंसर्स करेक्ट हों, अच्छे से आप इन ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, इफ देयर इज अ क्वेश्चन यू विल आस्क अ क्वेश्चन, if there is negative statement you will complete it that way, if it's a positive statement you will complete it that way. Okay, so according to the situations understandings you will complete all these sentences, एंड ये हम नेक्स्ट क्लास में इनको देखेंगे। ओके, आंसर्स आप लोग फिर टैली कर लेंगे। ओके, बिकॉज वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग के सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। ओके, बट इवन दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास कि आप लोग ने ये एक्सरसाइज कितने अच्छे से कंप्लीट कर ली। ओके, all right everyone, and we will continue in the next class from here. ये सारे जितने भी एक्सरसाइजेस मैंने आप लोगों को बताई हैं, राइट, ये आपको वैसे ही करनी है जैसे सजेस्ट किया है मैंने आप लोगों को। सजेस्ट इन द सेंस के रिकॉर्ड करिए, वॉइस ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए, सेंटेंसेस के क्वेश्चंस भी पूछिए, आंसर्स भी दीजिए। ओके, ये एक्सरसाइज जो हमने लास्ट में देखी उसको कंप्लीट करिए। ओके, and we will continue in the next class. Okay, everyone, and remember that there are other classes going on. Okay, so tell others, also tell your friends, uh, tell other people in your neighborhood about these classes. Ask them to come to learn, to study, to understand, and then practice together. Okay, chali, we are going to meet in the next class. Bye bye everyone, take care, keep on practicing. Okay, that is important.